What is Microsoft PowerPoint 2010 and how do we start it? What are the uses of this application software? So, today we are going to start our new chapter, that is Microsoft PowerPoint 2010. We will go at the corner of this window, that is Start button. This at left side, this four small box, it is called Start button. When you will click over it, list of program, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट आपके सामने खुल जाएगी. ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है, जो आपका डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, जो भी आपके कंप्यूटर में प्रोग्राम्स सारे इंस्टॉल्ड हैं, वो आपको यहाँ पर इनलिस्ट हो जाएंगे. वो सारे प्रोग्राम्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे. तो हमारे इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है और हम इसमें से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम काम करना चाहते हैं. सो दिस इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है, हम सबसे पहले स्टार्ट में गए. स्टार्ट के बाद हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सर्च करा. सर्च करने के बाद हमें मिल गया यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2007. बट राइट नाउ आई थिंक वी आर लर्निंग 2010. तो इट्स नॉट मच डिफरेंस, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. दोनों का एक ही काम है, टू showing to preparing a slide. When you will click over it, it will directly go to the new file. ये आपको एक न्यू ब्लैंक फाइल में लेके चले जाएगा. ठीक है, जिसका नाम होगा प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. सो दिस वे वी हैव क्रिएटेड अ न्यू प्रेजेंटेशन फाइल. हमने इस तरीके से एक न्यू प्रेजेंटेशन फाइल को क्रिएट कर दिया है. Now let's see what is the next topic. Next is adding a slide content. Now what is content here? Content means those things or graphics which you want to insert in your slide. वो सारे ग्राफिक्स, वो सारी चीज़ें, वो सारे ऑब्जेक्ट जो आप अपने स्लाइड में, जो आप अपने ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, वो चीज़ जो इंसर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड कंटेंट. लाइक यू वांट टू शो टेबल, ओके, सो दैट इज़ ऑल्सो अ कंटेंट. अगर आप पिक्चर को ऐड करना चाहते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ कंटेंट. क्लिप आर्ट ऐड करना चाहते हो, फ़ोटो एल्बम ऐड करना चाहते हो, या कोई शेप ऐड करना चाहते हो, स्मार्ट आर्ट ऐड करना चाहते हो, या कोई चार्ट ऐड करना चाहते हो, तो इस रो में जब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो सारे ऑप्शंस आप इंसर्ट कर सकते हो अपने स्लाइड में. जो भी मैसेज आप अपने ऑडियंस को देना चाहते हो, इन ऑब्जेक्ट को ऐड करके आप अपने जो आपके ऑडियंस हैं उसको देख के कुछ और अच्छा उनको लगेगा, उनको देखकर वो अच्छे से सीख सकेंगे. जैसे मैंने आपके लिए ये वाली स्लाइड प्रिपेयर करी थी, राइट, बहुत नॉर्मल सी स्लाइड है. तो इसको देखकर आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो. जैसे ये मेन पेज है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का. यहाँ पे मैंने सारे इस चैप्टर के कंटेंट लिखे हुए हैं. कंटेंट मीन्स हम जो जो चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कंटेंट है. सेम लाइक दैट हम जो जो चीज़ें अपने ब्लैंक फाइल में, ब्लैंक स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी, उसको भी हम कंटेंट कहते हैं. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. नाउ एडिंग स्लाइड कंटेंट. अब हम सीखेंगे हाउ टू ऐड अ स्लाइड कंटेंट. फॉर एडिंग अ स्लाइड कंटेंट, फर्स्ट वी विल चेंज द लेआउट. हम लोग लेआउट को चेंज करते हैं. ब्लैंक में चलेंगे तो यहाँ हमारे पास प्लेस होल्डर नहीं आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें प्लेस होल्डर आए. नाउ व्हाट इज़ प्लेस होल्डर? ये आपको छोटे छोटे ग्राफिक्स नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्लेस होल्डर. ठीक है, अगर हम चाहते हैं हम अपने स्लाइड में टेबल को ऐड करना, तो हमारे पास जब हम एक ये टेबल वाला जो हमारे पास एक छोटा सा ग्राफिक है, व्हेन वी विल पुट आवर कर्सर ओवर देयर, ऑटोमेटिकली वन डायलॉग बॉक्स, ये जो हमारा एक छोटा सा बॉक्स खुला है, इसको हम बोलते हैं डायलॉग बॉक्स.
अब यहाँ पे ही हमसे पूछ रहा है कि आपको कितने रोज़ और कितने कॉलम का टेबल चाहिए। मुझे चाहिए 5 रोज़ 5 कॉलम और 5 रोज़ का टेबल चाहिए। व्हेन यू विल क्लिक ओवर इट, ऑटोमेटिकली आप देखोगे यहाँ पे आपके पास 5 रोज़ और 5 कॉलम का टेबल आ गया है। तो इसी तरह सिर्फ टेबल ही नहीं, आप बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो। आप इमेज ऐड कर सकते हो, आप शेप ऐड कर सकते हो दिस वे, ठीक है। और आप बहुत सारी चीज़ें, आप इसमें वर्ड आर्ट भी ऐड कर सकते हो। सपोज आई वांट टू राइट हियर, I'll put here happy. Okay, so this way we can add different word arts. Fine. Now our next topic is adding a new slide. Now you can see here I have already created one slide. Now I want to add another slide. So how we will insert a new slide? Again we will go to the home tab. This is home tab. These all things which are available at the upside of the ribbon, it is called tab. Okay, this is called tab, like home tab, insert tab, design tab, animation tab, slideshow tab, review tab, view tab, and format tab, and ads in tab. So we will go to the home tab. Here you will find one option, that is new slide. New slide. When you will click on this new slide, another dialog box will appear. It will ask what kind of dialog box, what kind of slide you want. You want title slide, you want title and content slide, section header. So there are different slides. According to your choice, you can select any one. Fine. Here you will suppose I want this 2 content slide. So this way I have added another slide with a different layout. Here I have selected a title one, where I can write down the title and add different content in a single half page. And in another slide I have added a title as well as the difference between 2 topics which I can insert with different things. ठीक है, जैसे हमने पहले वाले स्लाइड में किया था, यहाँ पे हम टाइटल लिख के यहाँ पे टेबल इंसर्ट किया था, यहाँ पे एक शेप इंसर्ट किया था, यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट किया था। बट अब हमने नया जो स्लाइड इंसर्ट किया है, यहाँ पे हम टाइटल ऐड कर सकते हैं और इसमें हम कोई भी 2 चीज़ों में कंपैरिजन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वे वी कैन ऐड अनदर स्लाइड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज applying presentation theme. Now what is theme? Theme are pre-designed colored slide format. That means हमारे पास कुछ स्लाइड्स ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी बनी हुई होती हैं, उनमें ऑलरेडी सब डिज़ाइंड अवेलेबल होता है, बस हमें उसे यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, दैट काइंड ऑफ स्लाइड इज़ कॉल्ड प्री डिज़ाइंड स्लाइड और थीम। Now you can see here I have already created one slide, but I don't want this comparison or title one. So what I'll do, I'll click over the slide and again go to the layout, and we will change this layout into a blank. Okay, now this is that comparison slide is automatically converted into a blank slide, so that we can apply any presentation theme. This is a blank. Now we will go to the design tab. Okay, the third one after insert there is a design tab. Now you can find out here the various pre-designed themes are given. See, these all are pre-designed. मीन्स ये पहले से ही जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो ये सारी चीज़ें पहले से दी होती हैं, हमें बस यूज़ करना होता है। इफ़ यू वांट टू चेंज द कलर, इफ़ यू वांट टू चेंज द size of the alphabet, that is called font,
everything is changeable, but the options which are given here are the basic. These are basics design which you can use in your diagram and enhance the elaboration of your theme. Suppose I want to insert this in my diagram. So you can see here that single theme is available, that single theme is applied all over the slide. I have already created one more slide with not much data that is also applied with that theme. Fine. So this way we can apply theme as well. Learn to work with the word processing component of Microsoft Office 2010 for effective documentation. That means till now we have studied how to make our document more attractive, more informative. Okay, so with the help of word processing components. So further knowledge about Office 2010, we will now start with Microsoft PowerPoint 2010. This is a presentation software which offers most of the tools similar to Microsoft Word for creating multimedia slides presentation. This is also an application software which is quite similar to the Microsoft Word. The following topics such as introduction of the chapter, what is Microsoft PowerPoint 2010, how to start a PowerPoint, components of PowerPoint window, creating a new presentation, adding slides, contents, adding a new slide, applying presentation theme, changing the slide layout, saving a presentation, closing a presentation, opening an existing presentation, and how to apply a slideshow. So let's start. Today we will cover only 4 topics, that is introduction, what is the Microsoft PowerPoint, and starting, how to start a PowerPoint, and last is components of PowerPoint window. PowerPoint presentation. Microsoft PowerPoint presentation 2010. Presentation means communicating an idea or message effectively to the masses, or to communicate the common message to many people simultaneously. We use different presentation modes like audio visual presentation or text based presentation, etc. So what is basically presentation means? Presentation means to deliver, to share your thoughts, to share any message to the many people at once with the method of showing them audio visual or showing them a text based presentation. It is a very effective of presentation which can help us to convey the message behind the creating presentation in a clear manner. It means you can prepare a slide, you can add different objects like picture, audio, video, or any graphic to represent to share your message or idea to the different people at once. Okay. Now next is, what is Microsoft PowerPoint 2010? PowerPoint 2010 is a presentation software. Now you have already studied about software and hardware, right? Okay, let me tell you again, what is hardware? Hardware are those part of computer which we can touch, and software are a set of instruction. Both are the important part of computer to use computer properly. Now PowerPoint 2010 is a presentation software used to create multimedia presentation. Okay, multimedia presentation means
we can add in our slides, in our document, different kinds of graphic. हम अपनी स्लाइड्स में अलग अलग टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं. जैसे हम फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, वीडियो और ऑडियो क्लिप, राइट. एंड we can make our presentation, we can make our document more interesting and effective. PowerPoint presentation is a systematic representation of information in the form of slides using various components. Microsoft PowerPoint presentation is a systematic way of presenting your thoughts or any message to many numbers of people, so that they can understood what you want to say or what you want to deliver it. Okay, this presentation software will help you to make your thoughts more clear, more explainable to the people or viewers, to the viewers. Now you can see here on the screen, this is the interference of Microsoft PowerPoint. So here we can add in our document different like components like text, pictures, audio, video. So these are the different components which will help us to make our document more creative. A slide is considered as an individual page of a presentation. Now you can understood like this. You having your book, computer book, each page is representing a information. आपके पास एक बुक है, बुक में हर पेज कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर रहा है. ठीक है, तो वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट भी एक बुक है जिसमें हर स्लाइड, हर अलग अलग स्लाइड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, राइट. सो दिस इज़ अ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. नाउ वी विल स्टडी हाउ टू स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. Now we will see how to start PowerPoint. As you can see here, this is a laptop screen. Here at the left side, it is a start button located. Okay, when we will click over it, you will find a list of all program. This is the all program. Whatever program is installed in our laptop, all are listed here. So we want to work for MS PowerPoint. Click over the Microsoft Office. You can see here all the listed program of Microsoft Office are given here. We want to work on Microsoft PowerPoint. So we will select it and click over it. It will directly go to the blank document of MS PowerPoint. Okay, now you can see this is the interference of Microsoft PowerPoint. This is the blank document, nothing we have created, and this is called a slide. Okay, this is a slide and this is the area where the slide can see, okay, where we can see the numbers of slide. That is called a slide pane. So moving further, next we will study the components of Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint window has following components. First is a title bar. You can see here at the top of the document, it is written here title bar. It shows the default presentation name by default along with the program name, that is Microsoft PowerPoint. When we used to create any document,
By default, the name of the document comes like this: presentation or Word file or Excel file 1, and the document name, the file name, which file we are creating. So here it is a presentation 1 Microsoft PowerPoint. Next is Quick Access Toolbar. Nearby the title bar, you can see here the Quick Access Toolbar. It is a customizable toolbar present on the title bar having option to be used frequently. Now frequently means जो हम बार बार options हमें चाहिए होते हैं, all those tools or options are available under the Quick Access toolbar. Next is ribbon. Just below the title bar is a ribbon showing various PowerPoint program commands customized under the tabs and group. Just under the title bar, you can see here this all area is a under the title bar, all the tools, small boxes you can see here, this is a ribbon. Okay, and ribbon consists two things, that is tabs, this small tabs, and the group of small tabs called groups. Okay, it calls group. Like paragraph, paragraph is a group. Font is also a group. And inside font box you can see here bold letter B is written, it is a tab. Now next is file tab. File tab, this tab gives access to the file related options like new, open, save, save as, and print. File tab is located here, which gives us a shortcut for creating a new file, opening a new file, or save the existing document, or print command. Okay, this is also like a quick access toolbar, but this quick tools help us to perform any outer task, right? Outer task means suppose we want to print any document or this document in which we are working, so we have to go to the file tab where we will find the option to print the document and we will give the command. Next is view button. They are used to display the presentation slides in different views. You can see at the bottom of this view button, this button helps us to display the presentation slides. Whatever the slides we are creating, we can see that individual slide, that slide in a different forms, in a different phase. Okay, हम अपने जो हम स्लाइड्स क्रिएट कर रहे हैं उस स्लाइड्स को हम डिफरेंट तरीके से कैसे देख सकते हैं, that option is available here in the view button. Next is work area. This is a work area where we are working in a slide, that is called work area. You very well know that in every application wherever we are working, that place is called work area. And you can see here the placeholder. Okay, this box or the pair of these two boxes is called placeholder. That means here we can add different objects or different graphics like audio, video, okay, pictures. So this is a placeholder, right? Placeholder is located in a working area. जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पर हमारा प्लेस होल्डर लोकेटेड होता है ऑलरेडी. वी डोंट हैव टू फाइंड इट आउट, जस्ट वी हैव टू क्लिक ओवर दिस स्मॉल बॉक्स. नेक्स्ट इज स्लाइड्स एंड आउटलाइन टैब. नाउ यू कैन सी हियर slide tab and outline slide tab.
To the left side, slide pane have a slides and outline tabs. Slide tab shows the thumbnail views or thumbnail version of each slide, and outline tab shows the text content of each slide in the presentation. Now slide tab shows us what? जो भी हमने अपने स्लाइड्स में क्रिएट किया है, दैट ऑल थिंग्स वी कैन सी अंडर द स्लाइड पैन और स्लाइड टैब. And the outline area, okay, thumbnail means the first page or the last page of a document we can see only under in the outline slide tab. Next is note pan. Note pan is located at the bottom of your document. This area under the slide pan is used for typing presenter notes. That means, suppose you want to make any document and you want to leave any important note for the reader, you can write at the last box is located at under the slide pan. That area is especially for the readers and for those people who want to leave any special note for the reader. Okay, so these all are the components of PowerPoint.